start off by stacking the charts in the order of use. You would find your safety depth, which is a combination of draft and underkill clearance. You would then mark your initial and final position. Make sure you have all the information on the waypoint and mark it off on the chart. You would then draw a freehand passage based on recommendation by sailing direction or ocean passages of the world. You would decide your waypoints. Then fine-tune your waypoints to nearest grid line or to get good numbers, because you don't want ugly numbers like 3.333 or 3.003. It makes it much easier to feed in your GPS axis. Erase the freehand drawing. And then mark off, join these waypoints with straight line. You would then mark your course and distances. Make sure these course and distances are elongated vertically, because it's a bit like road map or road marks. As you would be using them flat on the chart table, they should be elongated, much more readable that way. You would then mark your no-go areas, which are simple hatched lines like these. Do not obscure relevant information on the chart by making very thick lines. You would mark called the master point that you can find out from your master. Standby engine point, contingency anchorages, which are pre-decided points just in case you have any problems. You can go there to anchor. Okay, so now you see beta, in this particular diagram you see we have our waypoints. The latitude and longitudes of the waypoints is mentioned. Then the line joining the waypoint, which represent our courses and distances, they are also shown. And along every leg of the passage, you have the course and the distance mentioned. Okay, the arrow indicates the direction in which you are going. You have the course, you have the distance on each of the passage. Then no-go areas are marked where the ship should not go in any case. When you are calling the master, that point is mentioned. The standby engine points is mentioned. Contingency anchorages are mentioned. All these things are mentioned. So whatever is written here and the same thing shown in the diagram, this basically tells you कि आपको अपने चार्ट पे पैसेज प्लान में क्या क्या चीजें शो करनी है. So does this solve your doubt, beta? How the passage plan is to be done on the chart? Anything, any doubt which is coming to your mind? No sir. Very good बेटा, great. ये मैंने आपको भेजा हुआ बेटा पैसेज प्लान का, जो मैंने आपको नोट भेजा था उसमें ये डायग्राम भी है और उसमें ये सारे पॉइंट्स भी मेंशन है. राइट, यू वांट मी टू सेंड यू अगेन द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस? नो सर, ये वाला ठीक है सर, ले लिया सर स्क्रीनशॉट. ओके बेटा, ग्रेट. सो लेट्स प्रोसीड अहेड देन. सर अगर पायलट पॉइंट टू पायलट पॉइंट बनाना हो तो कैसे बनेगा सर पैसेज प्लान? पायलट पॉइंट टू पायलट पॉइंट, राइट? यस सर. एग्जैक्टली इसी वे में बनेगा बेटा.
ओनली थिंग इज कि आपकी जो इनिशियल पोजीशन है दैट विल बी ए पायलट पॉइंट एंड योर फाइनल पोजीशन विल बी अनदर पायलट पॉइंट. Otherwise, rest everything remains the same. Any particular doubt coming to the mind? सर रिगार्डिंग मार्किंग आ रहा था सर कि उसके अंदर जैसे इसके अंदर मार्किंग की हुई है एसबी, कॉल द मास्टर एंड वे पॉइंट्स की, तो उसमें कैसी मार्किंग होगी पायलट को लेकर? बेटा बिल्कुल ऐसी ही मार्किंग होगी बिकॉज व्हेन यू गो फॉर पिकिंग अप द पायलट, पायलट पॉइंट पे पहुंचने से पहले इंजन शुड बी रेडी फॉर मैनूवरिंग एंड द मास्टर शुड बी ऑन द ब्रिज बिफोर यू स्टार्ट टू अप्रोच फॉर द पायलट पॉइंट. So exactly same markings you will have there. सर उसके अंदर और कोई पॉइंट्स भी रेडी कर सकते हैं लाइक वो पायलट लैडर के लिए या और कुछ? आप चाहो तो उसमें ऐड कर सकते हो बेटा. देयर इज लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन विच कैन बी फेड इन द पैसेज प्लान. ओनली थिंग इज जो यहाँ पे देख रहे हो आप, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पॉइंट्स विच शुड बी देयर. इनको छोड़ के आप और कुछ भी डाल सकते हो. ओके, prepare the pilot ladder or call the crew for receiving the pilot. ये चीज़ें भी मार्क की जा सकती हैं, पर सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना कि ऐसा ना हो कि आपका जो पैसेज प्लान है ये बहुत क्राउडेड हो जाए. द चार्ट शुड रिमेन क्लियर. ऐसा ना हो कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डालने के चक्कर में हम चार्टेड इन्फॉर्मेशन को ऑब्सक्योर कर दें. दिस शुड नॉट हैपन. अदरवाइज यस, यू कैन पुट दिस इन्फॉर्मेशन. एंड सर फॉर दिस लोगो एरिया हम लोग ऐसे ही रफली ड्रॉ करेंगे फ्री हैंड से? हाँ, दैट्स राइट बेटा. ओके सर. No-go area will not have any regular shape or feature, so you can draw it freehand. और सर अकॉर्डिंग टू द चार्ट हमें और कुछ पेंसिल करने की जरूरत है क्या, लाइक टाइड या फिर करंट उस एरिया में, या और कुछ ऐसा ही? That will depend upon where you are. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. आप अगर पैसेज प्लान बना रहे हो और आप देख रहे हो कि यू आर गोइंग क्लोज टू ए TSS. अब जब आप TSS के पास जाओगे तो TSS के पास तो बेटा हैवी ट्रैफिक रहेगा. So you can make a marking there, heavy traffic expected. Okay. So another example could be, अगर आप कोई पैसेज प्लान बना रहे हो, वहाँ पे कोई रिपोर्टिंग पॉइंट आ गया, वहाँ पे उन्होंने लिख रखा है यू शुड रिपोर्ट टू दिस पर्टिकुलर पोर्ट, तो फिर आप वहाँ पे एक मार्किंग करोगे दैट वी शुड बी रिपोर्टिंग टू दिस पर्टिकुलर पोर्ट. ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन वेयर यू आर, कोई भी पर्टिकुलर सिचुएशन जो नेविगेटर को, ड्यूटी ऑफिसर को पता होनी चाहिए, वो आप अपने पैसेज प्लान में डाल सकते हो. सर रिगार्डिंग पोजीशन इंटरवल, शुड वी पेंसिल दैट आल्सो? यस, यू कैन बेटा, यू कैन. ओके सर, थैंक यू सर. ओके ओके, चले बेटा, आगे चले. यस सर. राइट. You would also mark things like parallel indexing lines, which are just parallel lines to your course line to a fixed object, which you can use for parallel indexing later on. You mark reporting points, clearing bearings, any speed information, wheel level positions, port points. So if you look beta, these are other items which can be showed or marked in your passage plan. Parallel indexing lines, अगर कोई भी radar conspicuous point आपको वहाँ पे मिल रहा है, जैसे इस केस में we have this particular buoy, we can mark our parallel indexing line. ये distance हम show कर सकते हैं, जैसे इस केस में 4 miles. So you can have this parallel indexing set in your radar at 4 miles. And it will immediately tell you whether you are moving on your track or you are having some cross track error. Reporting point, as I told you, clearing bearings, ये आप मार्क कर सकते हो. स्पीड इन्फो, कहीं पे अगर आपको स्पीड को रिड्यूस करना है, TSS आ रही है, आपको स्पीड रिड्यूस करनी है, that can be marked. Wheel over positions, before every alteration we should be marking a wheel over position, the position where the wheel order, helm order should be given. Abort point,
जब भी हम किसी पोर्ट में या रिस्ट्रिक्टेड एरिया में एंटर करते हैं, तो दिस इज द पॉइंट बिफोर विच वी कैन स्टॉप आवर पैसेज. एक बार हमने इसे क्रॉस कर लिया, देन वी हैव टू कंटिन्यू टिल द टाइम वी रीच द डेस्टिनेशन. सो ये चीज़ें भी अपने पैसेज प्लान में मार्क की जा सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन अगर ये आपकी पर्टिकुलर सिचुएशन में एप्लीकेबल है. सर प्लीज पैरेलल इंडेक्सिंग थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर सकते हैं सर, क्या होता है? बेटा, पैरेलल इंडेक्सिंग एक ऐसा मेथड है जिससे हमें ये पता चलता है कि हम अपने ट्रैक पे चल रहे हैं या कोई क्रॉस ट्रैक आ गया है. क्रॉस ट्रैक का मतलब है अपने ट्रैक के राइट साइड में या लेफ्ट साइड में चले गए हो. ये होता है विद द हेल्प ऑफ रडार. रडार में हम अपने कोर्स के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे ये लाइन देख रहे हो आप, दिस लाइन. और ये लाइन आपके ट्रैक से कितनी दूर होनी चाहिए इसे आप सेट कर सकते हो. जैसे इस केस में हमने 4 माइल्स के डिस्टेंस पे ये एक लाइन बनाई है विच इज पैरेलल टू माई ट्रैक. ये लाइन आपको रडार की स्क्रीन पे दिखनी शुरू हो जाती है. अब जब आप इस एरिया में हो और ये लाइन आपको दिख रही है, अगर आप ये जो बॉय है, वेस्ट पॉइंट लेज, ये वाला जो बॉय है, इस बॉय को अगर इस लाइन पे रखोगे तो इसका मतलब है कि आपका शिप इस ट्रैक पे चल रहा है. अगर ये लाइन बॉय के राइट साइड में चली गई तो इसका मतलब आपका शिप भी ट्रैक के राइट साइड में आ गया है, स्टारबोर्ड में चला गया है. और अगर ये लाइन बॉय के इस तरफ आ गई, टुवर्ड्स द साउथ वेस्ट ऑफ द बॉय, तो इसका मतलब आपका शिप भी अपने ट्रैक के साउथ वेस्ट में चला गया है. दिस इज द पैरेलल इंडेक्सिंग मेथड बेटा. थैंक यू सर. सर ओके. वाटर क्लियरिंग बेरिंग बेटा, मैंने जो नोट आपको भेजा था आपने वो पढ़ा है? सर अभी देखा नहीं है. ओके, जस्ट हैव ए लुक देयर. मैंने वहां पे 2 डायग्राम्स बनाई हैं और डायग्राम के साथ समझाया है कि क्लियरिंग बियरिंग क्या होती है. ओके, जस्ट हैव ओके ए लुक, ओके अदरवाइज आफ्टर द वीडियो आई विल शो यू हियर, डोंट वरी. Once you've done that, then you would fill up your passage planning table and discuss the plan with your bridge team. And that's the planning stage. ओके बेटा. अब बेटा, अभी जो काम हमने किया ये सब होता है चार्ट पे. हमने सारी मार्किंग्स बना दी, पैसेज बना दिया. अब हम आते हैं अपनी आंसर शीट पे. जब आप पैसेज प्लानिंग चार्ट पे करोगे तो आपको आंसर शीट में भी कुछ इन्फॉर्मेशन डालनी होगी. उस इन्फॉर्मेशन में आएगा ये टेबल, पैसेज प्लानिंग टेबल. इस टेबल में क्या क्या चीज़ें होंगी? मिनिमम आइटम्स, वे पॉइंट के लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड्स, कोर्स एंड डिस्टेंस ऑफ ईच लेग जो आपने चार्ट पे मार्क किया है, यूकेसी विच इज़ एक्सपेक्टेड, आप लिख सकते हो वहाँ पे क्या यूकेसी एक्सपेक्टेड है. What is the speed with which you will be moving on that particular track, and what will be the steaming time? Okay. However, if you are running short of time, तो आप कम से कम latitude, longitude, course और distance, मिनिमम ये 4 आइटम्स अपनी आंसर शीट में ज़रूर शो करो जब आप पैसेज प्लानिंग का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो. अगर आपके पास टाइम है तो आप मिनिमम यूकेसी जो लेग पे आने वाली है, स्पीड, स्टीमिंग टाइम, और अगर कोई रिमार्क्स हैं जैसे ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम है, स्पीड रिड्यूस करनी है, मास्टर कॉल करना है, सो वट एवर रिमार्क्स यू कैन पुट इट हियर. सो दिस इज द टेबल विच वी शुड बी मेकिंग इन आवर आंसर शीट. सो ये 2 काम हैं बेटा इंपॉर्टेंट हमारे. वन इज मार्किंग द पैसेज प्लान ऑन द चार्ट, सेकेंड इज मेकिंग दिस टेबल ऑन आवर आंसर शीट. सो अब ये दोनों चीजें क्लियर हो गई बेटा? सर ये शीट हमको मिलेगी क्या एग्जाम हॉल में, या खुद बनानी है पेन से? नहीं बेटा, ये शीट आपको नहीं मिलेगी, ये आपको खुद बनानी पड़ेगी आंसर शीट पे. ओके. ओके, ये भी मैंने अपने पैसेज प्लानिंग नोट में आपको शीट बना के दी हुई है. सो यू कैन रेफर इट दैट दिस शीट फ्रॉम द पैसेज प्लानिंग नोट. ओके, लेट्स मूव अहेड. And that's
That's the planning stage. Stage 3 is execution. It's a common belief that execution is carrying it out, but that's a myth. Execution is actually the final changes which you make to your master plan based on latest information. You might have made a master plan 10 days in advance. Finally, maybe a ETT changes. Your whole passage plan has to be revised. If your ETT changes, your tide changes, your weather changes, lots of other information have to be revised. You might have to get new weather updates, and based on that, you have to change your passage plan. You might miss a convoy because of your delayed departure. You might have to revise your passage plan. That's execution. Your captain instruction might change. You might have to revise your passage plan. Maybe your charter's instruction might change. You have to execute your passage plan. The last stage is monitoring. Monitoring is basically monitoring your progress along the planned passage using various means, like using GPS to plot your position at regular interval, making sure you are in the planned track. You would use other means like radar or visual means or celestial means to plot your position on the chart at regular intervals. You would monitor weather and change your passage plan if required. You would also monitor schedule so that you are on track. You would monitor engine RPM and other instruments on board. That's part of monitoring. You would also monitor your heading. You would also do continuous depth monitoring. And that's the monitoring stage. So these are the stages of passage plan. Thanks for watching. Okay, beta. So this was the passage planning video. Let me show you the note which I have sent you. So बेटा ये मैंने आपको भेजा हुआ है passage planning note. You see these are the steps which you have to follow when you are marking everything on the chart. Clearing bearings. ये clearing bearing क्या होती है बेटा? They are the bearings of prominent points that keep you clear of dangers. इसीलिए इनका नाम रखा गया है clearing bearings. Generally we use a prominent mark on the chart that we will be able to identify, जिसको हम देख पाएंगे आसानी से, ऐसा कोई मार्क क्लियरिंग बियरिंग के लिए चूज किया जाता है. So what is a clearing bearing बेटा? देखो. Now you see there is a landmark in this particular area. हमने इसकी बियरिंग बना रखी है क्लियरिंग बियरिंग 045 और यहाँ पे हमने लिखा हुआ है माइनस और यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस. इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है you see जहां पे माइनस है that is a safe zone, it is a safe zone, और जहां पे प्लस है that is a dangerous zone. So कभी भी आपकी बियरिंग अगर 045 से कम है, आप इस ऑब्जेक्ट की बियरिंग लेते हो और आपको इसकी बियरिंग 045 से कम मिल रही है तो आप सेफ जोन में हो. नेगेटिव का मतलब है कम. और कभी भी अगर आप इस ऑब्जेक्ट की बियरिंग लो और ये आपको 045 से ज़्यादा मिले तो इसका मतलब है कि आप डेंजर में हो. प्लस मीन्स ज़्यादा. दिस इज द मीनिंग ऑफ क्लियरिंग बियरिंग. समझ में आया बेटा? यस सर. वेरी गुड. एक्सक्यूज मी सर. हाँ बोलो बेटा. सर लाइक जब एक्चुअली में हम जब ये पैसेज प्लानिंग का करते हैं तो जैसे ये छोटे छोटे जो आइसलैंड्स होते हैं या कुछ भी होता है तो हम इसमें सर
मार्क करके हम इस पे ये भी तो लिख देते सर, नो गो एरियाज। हाँ बेटा, दैट ऑल्सो कैन बी डन। अब यहाँ इन्होंने जो क्लियरिंग बियरिंग बनाई है, इसकी जगह पे आप यहाँ पे ऐसा एक नो गो एरिया भी बना सकते हो। ओके, लाइक दिस, ऐसे भी आप बना सकते हो। एंड यू कैन राइट हियर नो गो, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। जो भी आपको अच्छा लगे, आप दोनों में से कोई भी काम कर सकते हो बेटा। ओके सर, थैंक यू सर। ओके ओके बेटा, ये जो टेबल की मैं बात कर रहा था बेटा, ये टेबल मैंने यहाँ पे शो किया है। सो दिस इज द टेबल विच यू हैव टू मेक ऑन योर आंसर शीट। सेम थिंग मेंशन्ड हियर, लेट, लॉन्ग, कोर्स, डिस्टेंस। These columns, if you have time, you fill them up. If you don't have time, you can leave them. सर ये यूकेसी और स्पीड को कैसे डिसाइड करेंगे? ओके बेटा, जब आप बेटा चार्ट पे कोई भी एक लेग को ड्रॉ करते हो, लेट अस से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जा रहे हो आप देखो कि उस पर्टिकुलर लेग में सबसे मिनिमम डेप्थ कौन सी दिखाई दे रही है। लेट अस से वहां पे आपको डेप्थ मिनिमम जो दिखाई दे रही है वो है 20 मीटर्स मिनिमम, बाकी सारी इससे ज़्यादा है। यहाँ पे 34 है, यहाँ पे 27 है, ओके, यहाँ पे लेट अस से 42 है। दिस वे मिनिमम डेप्थ आपने देख ली आपके पैसेज पे, और वो 20 मीटर्स आ रही है। अब जो भी आपका ड्राफ्ट है, लेट अस से आपका ड्राफ्ट जो है वो 10 मीटर्स है। सो आप बता सकते हो बेटा यूकेसी कितनी होगी? 10 मीटर्स ड्राफ्ट, 20 मीटर डेप्थ। 10 सर। वेरी गुड। सो यूकेसी मिनिमम विच इज एक्सपेक्टेड इज 10 मीटर। सो आप यहाँ पे लिख दोगे 10। अब इसका पर्पस क्या है? ड्यूटी ऑफिसर डेप्थ को मॉनिटर करता है, और कभी भी अगर उसे यूकेसी 10 से कम मिलेगी, देन इट इज ए वार्निंग साइन, यू आर नॉट ऑन ट्रैक। हमारे ट्रैक पे 10 मीटर से कम यूकेसी नहीं होनी चाहिए थी। आपको अगर 10 से कम यूकेसी मिल रही है, चेक योर पोजीशन। क्लियर बेटा? यस सर। ओके ओके, सो ये वही डायग्राम है जो हमने अभी वीडियो में देखी बेटा। दिस इज विद द नोट्स, यू हैव दिस डायग्राम, द सेकेंड वन। सर ये स्पीड को और हाँ बोलो बेटा। स्पीड का रह गया सर। बेटा आपकी आवाज ब्रेक हो रही है बीच में, कैन यू रिपीट? हाँ सर, स्पीड कैसे डिसाइड करेंगे हम लोग? ओके, एंटायरली अप टू यू बेटा। अब जैसे इस पैसेज में आप जा रहे हो, ये जो पहली लेग है, आप इसमें कुछ भी स्पीड डिसाइड कर सकते हो। फुल हेड पे जाना है या हाफ हेड पे जाना है। ओके, सो टू गिव यू एन एग्जांपल, पहली लेग हमारी क्लियर दिख रही है, सो आई वुड लाइक टू गो ऑन फुल हेड। सेकेंड लेग इज ऑल्सो क्लियर, फुल हेड। अप टू स्टैंड बाय इंजन आई विल बी गोइंग ऑन फुल अहेड। फिर इसके बाद आई विल रिड्यूस माई स्पीड, मैं मैनूवरिंग स्पीड पे आ जाऊंगा, एंड मे बी कॉल मास्टर पॉइंट के बाद आई विल गो ऑन हाफ अहेड। सो ऐसे स्पीड डिसाइड की जा सकती है। इट इज एंटायरली अप टू यू बेटा। ओके सर। ओके ओके बेटा, सो दिस completes the passage planning part. So are you clear now? How do we do the passage planning on the chart? What all things we mentioned on the chart? What all things we mentioned on the answer sheet? ये चीज clear हुई बेटा? Yes, sir. Very good बेटा, great. So ये note बेटा सबके पास है, so keep it safe and read this a couple of times, and just before you go for your exam एक बार इसको पढ़ लो, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। ये चीज़ों को मैंने शो करना है, and you will be able to attempt it well.